जय भीम, नमो बुद्धाय बड़े भैया जी, स्वागत है आपका लाइव में। कैसे हो?
दौड़ो नहीं बेटा। रोटी बनाता ना रे यार, रात में जान दो।
जय भीम, नमो बुद्धाय। भारती भाई कैसे हो? स्वागत है आपका लाइव में। कैसे हो भाई? खाना पीना हुआ आपका? कहाँ चले गए भारती भाई? आज तबीयत ठीक ना था। अब ना कम बना चलो नहीं राधा, मिर्ची काट लो, उसके बाद बना। कैसी गोल चाहिए, चपटी चाहिए, नान चाहिए, पराठा चाहिए, चाप चाहिए, जो बताओ बनेगा आज। लाओ बनाओ, तबीयत ठीक नहीं है ना। लाल मिर्च से घुसती तो ठीक है। लाल मिर्च तो लाल मिर्च नहीं है ना, दुकान से लिया है ना।
मानवी कुमारी, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू सो मच सिस्टर, वेलकम है आपका हमारी लाइव में। कैसी हो आप? मानवी सिस्टर स्वागत है। कैसी हो आप? के छाता पे खुल गई ना।
फ्रिज में रख दो उसको, धूप आई अच्छी। सादा है, रख दो उसको फ्रिज में, अभी फ्राई कर रहे हैं, फ्रिज में रखो। क्रांतिकारी जय भीम भारती भाई, आपका तबीयत कैसा दीदी? ठीक है भाई, कुछ ठीक है, पूरा सही नहीं है, थोड़ा बहुत सही है, लेकिन सर दर्द ठीक है आपका, अब ठीक है। और नाश्ता हो गया है दीदी? कुछ नहीं हुआ भाई, बस डायरेक्ट आज खाना ही बना रही हूँ, हिम्मत नहीं हो रही थी सुबह जल्दी, आज नहीं उठी हूँ। आज सो करके ही लेट उठी हूँ। आप बताओ, आपका हुआ? आपका हुआ भाई? अभी मैं बेड पर ही हूँ, अभी मैं कैसे खा लूंगा खाना दीदी? अच्छा, अभी बेड पर हो? क्यों भाई? 10:35 हो गए, अभी बेड पे कहाँ हो? तबीयत ठीक नहीं है क्या? बेड पे कहाँ हो अभी? बेड पे कहाँ हो भाई, बता। ठंड लग रहा है इसलिए मैं ऐसा भी खाना खाया हूँ 12 बजे। 12 बजे रात में? रात में 12 बजे खा लिए खाना आज? 12 बजे खाए हो कि खाते हो 12 बजे? बहुत ठंड हवा चल रहा है दीदी, इसलिए मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ। ठंडी काफी है ही है भाई सच्ची, लेकिन आज मेरे यहाँ धूप निकली है, मैं तो अभी नहीं गई, बच्चे बता रहे हैं छत पे अच्छी धूप आई है। गलती से लिखा गया था कि 12 बजे मैं खाया हूँ, खाता हूँ मैं 12 बजे, वही तो मैं भी बोल रही थी भाई।
और बताओ, मम्मी पापा सब लोग फैमिली में सब बढ़िया है भाई? हाँ दीदी, मेरे फैमिली में सभी लोग ठीक हैं दीदी। ओके भैया।
जय भीम, नमो बुद्धा, नीला सलाम भारती भाई को छोड़कर। जय भीम, नमो बुद्धा सिस्टर, स्वागत है आपका, कैसी हो आप? आ जाइए सभी लोग, खाना खा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बहन पूछने के लिए। पूजा लाइव में आई थी दीदी। अच्छा भाई, मुझे लग रहा है कि उसका रिचार्ज शायद ख़त्म हो गया है। नहीं भाई, पूजा नहीं आई थी। कभी कभी मेरा नेट ही नहीं चलता है दीदी। कोई बात नहीं है भाई। नहीं भाई, पूजा नहीं आई थी, उसकी बहन अंजू आई। मुझे भी लग रहा है कि पूजा नहीं पगली हो। क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम पगली को छोड़कर भारती भाई की तरफ से। जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम बड़े भाई। और बताइए आप लोग कैसे हो? खाना पीना हुआ कि नहीं? अभी नहीं हुआ बहन, बन रहा है। क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम पूजा बहन, आप कैसी हो पूजा? भारती भाई पूछ रहे हैं। मैं खाना खा रही हूँ, आप लोग भी खाना खा लीजिए। खा लो बहन खाना, आपका खाना पीना हो गया? पूजा भाई मैं ठीक हूँ, आप बताइए? भाई मैं खाना खा रही हूँ, पूजा बहन बोल रही हूँ। मैं भी ठीक हूँ पूजा बहन, आइए खाना खा लीजिए। थैंक यू बहन, थैंक यू। मैं तो अभी सोया हुआ हूँ। पीसे पूजा, पीसे पगले। अच्छा भाई, पीसे तो बहुत कुछ होता है भाई, क्या क्या बनाओगे?
बताइए भाई, घर परिवार में सभी लोग कैसे हैं? ठंडी ज्यादा लग रहा है क्या भाई, सोए हो? बतिया इज द सेम। अच्छा, रात ऊपर से लाओ, लगाओ जरा पानी, नहाना है। आकाश, एक पेज देना। पी से पकौड़ा भी होता है दीदी? अच्छा भाई, सभी लोग ठीक है मेरे फैमिली में। आरती दीदी ज्यादा मत बोलो। कल भाई आप कहाँ चले गए थे, पहले ये बताइए। रात में मैं आपको बुला रही थी। क्या कहाँ रह गया? देखिए क्या कर रहा हो? पूजा लाइव का ऑप्शन आ गया है, लेकिन पहले वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। पेज देना आकाश एक। पापा कहाँ चले गए? छत पे हैं? पापा को फोन कर दो, उनकी मैच की नॉलेज लेंगे। अभी आएंगे तो ले आएंगे। अभी दे दो, रुक जाओ। मेरे नेट मुझे इतना कस के पकड़ के रखा था कि मुझे लाइव में आने ही नहीं दे रहा था, तो मैं कैसे आता? ऊपर से पहले चलो अपना काम करो बेटा। चावल भी है तो चावल और ये दे दो। चावल और ये चावल का, अरे इतना नहीं, ज्यादा चावल, थोड़ा सा जितना। अरे मैंने और बोला, आप कम कर रहे हो। नहीं खा पाऊंगा, छत पे जाओ। मैं ये खाऊंगा। छत पे जाओ, वहीं खा लो। मामा सब लोग सिर्फ एक पिलाओ, उसको भी दे दो। रोने वाली नहीं थी, अब आई है भाई। क्या हुआ, चोट लग गई? कैसे लग गई चोट बाबू को? हाथ दब गया? कहाँ गई थी? कहाँ? वहाँ उल्टे क्या करने गए थे? चुप जाओ। मुंह हटा दिया, अम्मा हटा देंगे। ऊपर जाओ, यहाँ हटा देंगे। जाओ आराम से, जाओ खा लो। हाँ जाओ खा लो, जाओ मेट पे बैठ के खा लो। रोने वाली क्या भाई, मैं समझी नहीं। मेरा रिचार्ज आज ही तक बचा हुआ, मुझे लगा कि मेरा रिचार्ज कल ही तक था। मैं भी भाई आ गई बिस्तर पर। पागल को समझाना और 10 कोस पैदल जाना बात बराबर है। अच्छा भाई, बाय बाय भारती भाई, बाय बाय। मेरा भी रिचार्ज देखो कब खत्म होता है।
आते आप प्लीज यूज करके थोड़ा थोड़ा। बोलो भाई, मैं आपको मना नहीं करूंगी। रिचार्ज देखा नहीं जाता है, रिचार्ज किया जाता है। जो भी आपको बोलना है, मेरी बारी आएगी तो दीदी से शिकायत मत करना। ओके भाई, मना करने से क्या है, मान जाएगा, मान जाऊंगा। मैं आपको बोलती हूँ तो आप दीदी से शिकायत करते हो। बोलो, बड़े हो मेरे से। अच्छा, आप पागल नहीं हो, बुद्धमता हो। ठीक है मम्मी, 1 किलो पानी की बोतल दे देना। 1 किलो पानी की बोतल ले जाओ ना, पानी की बोतल कौन सी मम्मी मना कर रही है, मत ले जाओ। बड़ी कौन सी, इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा, मेरी आंखों पे धूप लगी हुई है। दीदी, क्या मैं आपसे एक बात बोलूं? बिल्कुल भाई, बोलो, क्या बात है? भारती भाई बोलो, फिर मैं बोलूंगी आपसे। लाठी चलेगी, लाठी। श्रेया, भाई आप कुछ भी बोलिए, प्यार से, मुझे दिक्कत नहीं श्रेया, है। अपने पैसे तो रख ले, ये सीढ़ी पे रखे हुए हैं। वो रख लेगी बेटा, उसका मत छूना बस। फिर रोने लग जाएगी तो चुप भी नहीं होंगे। हाँ भैया बोलो। किसी का जन्म सन 2005 में हुआ और किसी का जन्म 2000 में हुआ है, तो आप ही बताइए कि इसमें से कौन बड़ा होगा? जिसका जन्म सन 2000 में हुआ भाई, 2000 में जिसका हुआ वही बड़ा होगा। आप सच सच बोलना दीदी, बता तो रही हूँ। सन 2005 वाला थोड़ी बड़ा होगा, वो तो छोटा ही होगा। आप बड़े हो भाई। हाँ। पगली बोलती है कि सन 2005 हुआ है, जिसका जन्म हुआ हमसे 5 साल बड़े हैं। अच्छा, ऐसा कैसे हो जाएगा सिस्टर? नहीं भाई, आप बड़े हो। मेरे आधार कार्ड पर मत जाओ, मैं आपसे पहले बोली हूँ। कभी कभी हो जाता भारती भाई, आधार कार्ड या स्कूल सर्टिफिकेट में ऐसे आगे पीछे कर देते हैं। अब आप ही पगली को समझा दीजिए दीदी कि मैं 5 साल बड़ा हूँ या 5 साल छोटा हूँ। 2000 में किसका जन्म हुआ है, सन 2005 में किसका हुआ है, ये पहले डिसाइड करो।
मेरा आधार कार्ड मेरे पापा बनवाए हैं, ये टम्पू बोले हैं भाई। जय भीम नमो बुद्धाय। मैं नहीं मानती हूँ, ठीक है। पहले बताओ सोनू भाई, जय भीम नमो बुद्धाय, स्वागत आपका। कहाँ थे आप कल से? बताओ भैया, आप लाइव भी नहीं आए। और क्या बात थी? स्वास्थ्य अच्छा नहीं है क्या आपका? बताओ पहले। कहाँ हो कल से आप? जल्दी बोलो सोनू भैया, कहाँ हो कल से आप? मैं नहीं मानती हूँ, ठीक है। आधार कार्ड पर 1-2 साल का अंतर होता है, ना कि 10 साल। ऐसा नहीं मानूंगी भारती भाई, मेरा भी तो हो गया है। बताओ मैं क्या करूँ, दूसरों को कैसे बोलूं? मेरा भी तो हुआ है भारती भाई, मेरा भी हुआ है। मेरा तो ज्यादा कम हो गया है। मेरा 88 का जन्म है, 93 का सर्टिफिकेट में हो गया है। हो जाता है भाई। आप मेरे से बड़े हो, मेरा जन्म सन 2005 में हुआ है दीदी। अच्छा भाई। क्रांतिकारी, जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम सोनू भैया। मैं चली जाऊंगी भाई, ज्यादा बोलोगे तो। आप कैसे हैं सोनू भैया? आपका खाना पीना हो गया है? जय भीम नमो बुद्धाय, नीला सलाम सोनू भाई, जय भीम भारती भाई और अंजू। अच्छा, मैं समझता हूँ कि आपका आधार पर गलत हो सकता है, लेकिन अंजू दीदी का भी गलत है। मैं लाल से 4 साल छोटी हूँ भाई। थोड़ा सा और चावल दे दो ना, दे रही बेटा, साग में अच्छे हाँ दे रही। एक ही कमेंट में दोनों लोग स्वीकार नहीं करूंगा सोनू भैया। सोनू भैया कुछ बता नहीं रहे हो, प्लीज बोलो। थोड़ा सा बस। कल से कहाँ हो सोनू भैया? मेरी बात सुन रहे हो तो बोलो। फिर भी मेरे से 1 साल आप बड़ी हो। मेरा भाई मेरे से काफी छोटा है भारती भाई। उसका भी 93 है, उसका 93 जन्म ही था, तो उसका सेम ही है। और मेरा था 88, तो मेरा 93 कर दिया है। कुछ नहीं हुआ है। फिर कहाँ थे आप कल से? तबीयत खराब है? सच बोलो। सोया हूँ। कल से सोए हो? जी भाई, आप पूछ सकते हो। और सही भी नहीं होता जल्दी भाई, कोई चीज सही करवाओ तो बहुत टाइम लगता, मुश्किल होता वो भी। मम्मी से ओके। आप अंजू दीदी से 4 साल छोटी हैं, फिर भी आपका जन्म सन 2004 का होगा और मेरा जन्म सन 2005 का हुआ, इसलिए आप मेरे से 1 साल बड़े हो। कोई बात नहीं भाई, रिस्पेक्ट होना चाहिए, कोई बड़ा छोट से मायने नहीं होते। 1 साल 2 साल से छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है। सोनू भैया तो मेरे से काफी छोटे होंगे, फिर भी मैं उनको भैया बोलती की हूँ कि नहीं? फिर भी आप मेरे से बड़े हो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ भाई। मेरा तो संदू आप सबसे छोटे हो हाँ?
है सोनू भैया, आप सबसे छोटे बन जाओ। सन 2002 की हमारी भतीजी है, हमारे भैया के बच्चे तब तो आप लोगों जितने बराबर है। मैं छोटा हूँ। मैं छोटा हूँ। अच्छा भाई, बड़े हो, पहले आपस में डिसाइड कर लो, छोटे ही बड़े कर लो, कौन बड़ा कौन छोटा। कूड़ा की गाड़ी आ रही है बेटा, डाल दो। आप छोटे हैं तो क्या हुआ, लेकिन आप मोटा है सोनू भैया। अच्छा, और मैं छोटा के साथ साथ पतला भी हूँ। राठौर भैया जी जय भीम, नमो बुद्धाय, स्वागत आपका। कैसे हो भैया? लाठी चलो, तू लाठी ज्यादा बोल रही हो। अच्छा, अच्छा भाई, मैं छोटा हूँ, छोटा। लाठी चलो, तू लाठी ज्यादा बोल रही हूँ तो मैं आपसे छोटी हूँ। चलाओ लाठी, देखते हैं भाई, मैं छोटा हूँ। कोई मतलब नहीं भाई बोलने का, मुझे पता है मैं क्या बोलूंगी। मेरी जिंदा लाठी फूटी जिंदा कबार। अच्छा, ये मुझे भी पता है। पेट भर गया, साग और खाऊंगा। साग दे दो, मेरे को चावल दे दो, और इसको भी थोड़ा साग दे दो। साग को थोड़ा सा चावल के साथ, चावल को चावल थोड़ा सा दे। थैंक यू। सोनू भैया जब समझौता करा देना, समझौता करा देना भाई। मैं नहीं डरता हूँ लड़ाई करने से, दीदी भाई से लड़ाई हो जाएगा।
लड़ाई कोई मत करो। मेरा लड़ाई करना खानदानी आदत है। मेरी देखूंगा कौन जीतेगा। मैं देखूंगा कौन जीतेगा। ठीक है भाई, जरा देखना, मैं आ रही हूँ ऊपर खाना दे करके।
थैंक यू पुष्पा दीदी, थैंक यू। कैसी हो आप? मैं भी अभी नहा के छत पे आई हूँ। कैसे हो दीदी? थैंक यू सो मच। मम्मी के लिए जरा सी बच्चे इधर मत आना। नहीं तो लगा लो। थैंक यू पुष्पा दीदी। खाना ना हुआ आपका? वाह कहाँ गई ना? बाहर तब ये नहाई भरी है ना, तो ठंडे पानी से। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच पुष्पा दीदी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाय बाय दीदी, बाय बाय। क्यों गुस्सा हो रही हो इतना?
गुड आफ्टरनून सिस्टर, गुड आफ्टरनून, कैसी हो आप? तो ताजा पैसा जमा करता कुछ कौन? वो रिंकू हम्म। कुछ दिन से जमा करता। जय भीम ज्योति सिस्टर, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप कहाँ से हो सिस्टर? मैं यूपी आजमगढ़ से हूँ बहन, आप कहाँ से हो? आप कहाँ से हो ज्योति सिस्टर? अयोध्या से। ओके, थैंक यू। और बताओ फैमिली में सब कैसे हैं? इधर खाती हैं। मस्त है सिस्टर। ओके बहन, मस्त ही रहना चाहिए। और बताइए खाना पीना हुआ? सब लोग ओके, थैंक यू। जय भीम नमो बुद्धाय सिस्टर। वीर भैया जी जय भीम नमो बुद्धाय, कैसे हो आप? कैसे हो वीर भैया जी? हो गए हैं। अच्छा, आज धूप अच्छी निकली है सिस्टर, बहुत अच्छी निकली है धूप। भैया दिख रहा है ना, धूप बहुत अच्छी निकली है। मैं भी नहा के जस्ट छत पे ही आई। खाना पीना हुआ भैया? इधर भी अच्छी धूप निकली है। अच्छा, इसका मतलब आज मौसम सब जगह सही है। हाँ जी। भाभी कैसे हैं भैया? आपका हो गया सिस्टर? अभी कुछ नहीं हुआ भैया, सुबह उठी थोड़ा सा लेट, स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। कल सिर में बहुत दर्द हो रहा था तो सुबह लेट उठी हूँ। फिर खाना वाना बनाई हूँ, फिर नहा के जस्ट ऊपर आई हूँ। अभी खाई हुई कुछ नहीं है। घर में सब ठीक है सिस्टर, ज्योति दीदी सब ठीक है। घर में हमारे सब बढ़िया हैं। शिवानी भी ठीक है सिस्टर। ओके भैया।
कल की तैयारी कर रही हैं, चर्च जाना है उनको। अच्छा, चर्च जाना, कल क्रिसमस डे है ना। कल क्रिसमस डे है ना भैया, इसलिए तैयारी तो लोग आज ही कर रहे हैं। हाँ जी। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो भैया? भाभी तो कल जाने की तैयारी कर रही हैं, आप क्या कर रहे हो? हाँ, आराम से कपड़े क्यों खींच रहे हो? कल तो जलंधर जाएंगे। अच्छा भैया, आप भी नहीं, आप नहीं जाओगे क्या? सिर्फ भाभी जाएंगी? मैं सोने की सिर्फ सोने की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, आप सिर्फ सोने की तैयारी कर रहे हो। ऋषिका, ऋषिका, हेलो, हेलो ऋषिका, हेलो, हेलो। देखो, शिवांशी बुला रही है। शिवांशी बुला रही है। श्रेया, देखो तुमको देखते कैसे हंस रही है। धूप ले रही हो? धूप, इस पे मत गिर जाओगी। नहीं। मैं नहीं जा रहा हूँ, शिवानी और उनकी मम्मी जाएंगी। आपको भी जाना जरूरी है भैया, साथ में आप भी जाओ। कैसे अकेले भाभी को छोड़ देते हो? डांस प्रिपेयर करता है। ओ सॉरी, कोई बात नहीं। सीरिया, अरे नहीं लगता। हमारी दीवानी है, छोटे ससुर की बहू। वो हमेशा अकेले जाती हैं जहाँ जाना हो। आप जाते ही नहीं होंगे तो फिर अकेले ही जाएंगे ना। आप जाते तो भी। हवा बहुत चल रही तेजी से। अरे अम्मी चुन्नी थी। साल देना मेरा। बाल सूख गया लेने से ज्यादा। मैंने देखा नहीं। कोई रोक टोक नहीं है, होना भी नहीं चाहिए भैया। ये श्रेया, 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 कंघी जरा फेंक देना बेटा। बाय बाय ज्योति दीदी, बाय। कंघी देना, वही है, मैट पे है। इधर हवा नहीं चल रही है, बस धूप है। आपकी इधर हवा भी चल रही है, हमारी इधर हवा चल रही है भैया बहुत तेज।
एकदम अधेरा अधेरा। एक मिनट आ रही हूँ भैया। ऊपर ही खेलो, बदमाश नहीं। लड़ाई नहीं करना बेटा, आराम से खेल लो। हाँ तो पानी पी लो। पानी है ना? यहाँ नहीं, किचन में है। अम्मी अच्छा, इधर तो आज गर्मी है, टी शर्ट डाल के घूम रहे हैं। नहीं भैया, यहाँ तो हवा चल रही है। धूप में बैठी थी, थोड़ा ठीक था, नीचे आने के बाद ठंडा लग रहा है। हाँ जी, और बताओ बड़े भैया जी। बाकी किधर है आज? बाकी सब ऊपर ही, वही बच्चे ऊपर वाले कमरे में खेल रहे हैं। बाकी हस्बैंड हस्बैंड गए हैं आज बाइक लेने। अच्छा, लाइव में। बाकी किधर है? आज कोई दिख नहीं रहा। सोनू पाजी, सोनू भैया से बात करनी है आज, पता नहीं क्यों कल से उनकी लाइव भी नहीं चल रही है। लाइव में आए थे, कमेंट करके चले गए। मैंने पूछा भी क्या हुआ भैया, कुछ बताए नहीं। लग रहा स्वास्थ्य सही नहीं है या कुछ हुआ होगा। हम सोचे हमारे घर में बच्चों को पूछ रहे हैं वो कहाँ हैं, सब हलचल करते थे रोज। और बताओ सिस्टर, सब बढ़िया? बड़े भैया जी सब बढ़िया है। आप सुनाओ अपना।
कल सिस्टर रवि पाजी का बर्थडे, मुझे पता, आपने बताया था भैया ना, आपने कल बताया था, पता है, भूले नहीं है। कल सबसे पहले विश करेंगे। सोचा याद करवा। थैंक यू भैया, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। याद रहता है कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ चीजें भूल जाते हैं। एडवांस में कर देंगे रात में 12 बजे। मुझे लगा आप में भी साधना सिस्टर वाली क्वालिटी है, वो और याद रखना। ऐसी बात नहीं है वीर भैया जी, मुझे याद है। इतनी तो याद रहता है, बाकी वैसी चीजें भूल जाती हैं। क्या लिखा है कुंडियन भाई, क्या लिखा है? जय भीम, जय भीम भैया, जय भीम, जय भीम दीदी जी, जय भीम भाई। कोनेडियन भाई कि कॉमेडियन भाई, क्या चीज? कॉमेडियन होना चाहिए, कॉमेडियन, कोनेडियन। कॉमेडियन लिखा है, पर कॉमेडियन तो नहीं लिखा है। कॉमेडियन नहीं लिखा है भैया, कोनेडियन लिखा है, वो गलती से लिखा गया दीदी जी। ओके, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हो आप? मैं गारंटी से कह सकता हूँ, जब तक किसी का स्टेटस सिस्टर नहीं देखेंगी तब तक याद नहीं। अच्छा, स्टेटस देखने के बाद याद रहेगा, उसके पहले याद नहीं रहेगा। ठीक है, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। आप सिस्टर हो या ब्रदर, ये पहले बता दो। अच्छा, बताना भी मत भैया आज। आज वीर भैया जी साधना दीदी को मत बताना, कल देखो क्या उनको याद रहता है कि नहीं। वैसे याद रहेगा, ऐसी बात नहीं है, दीदी का इतना वो भी कमजोर नहीं है। उसके बाद सिस्टर का स्टेटस लगेगा। अच्छा भैया, पहले स्टेटस देखेंगे उसके बाद लगाएंगे। नहीं रहेगा, चाहिए इतनी गारंटी है, कल याद नहीं रहेगा। मैं जानता हूँ उनको। अच्छा भैया, कहाँ चले गए कॉमेडियन भाई?
सूरज पश्चिम से निकल सकता है पर उनको याद नहीं रह सकता। ऐसी बात है बड़े भैया, ऐसी बात नहीं है, याद रहेगा। इतनी तो मेन मेन चीजें याद तो रहनी चाहिए। आप कल डेमो देख लेना। अच्छा भैया, देखेंगे कल। हाँ जी, अच्छा देखेंगे कल। वैसे आजकल मेरे युद्ध नहीं होते हैं ना सिस्टर। क्यों नहीं हो रहे हैं भैया? क्यों नहीं हो रहे हैं? कब हुए वही तो पूछ रही हूँ, हो क्यों नहीं रहे हैं? नहीं होते अब सिस्टर। ले लिया गाड़ी? कलर समझ में नहीं आया। कोई बड़ा शोरूम है। अच्छा। अच्छा
स्कूटी का भी डिमांड बहुत है। अब लाइव में नहीं लड़ता, डायरेक्ट लड़ता हूँ सिस्टर। अच्छी बात है भैया, पर्सनल लड़ाई अलग ही होनी चाहिए। लाइव में कितने लोगों को अच्छा भी नहीं लगता है, कितने लोगों को अच्छा है, कितने लोग विरोध भी करते हैं। पर्सनल लड़ाई ठीक है। अच्छा, जीजा की स्वभाव अच्छी नहीं है, कितने अच्छे से बोलते हैं। हाँ जी। रविंद्र कुमार, जय भीम बड़े भैया जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आपका हमारे लाइव में, कैसे हो आप? जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम सिस्टर, जय भीम भैया, कैसे हो बड़े भैया जी? लाइक डन, थैंक यू भैया, थैंक यू। कैसे हो आप? पाजी का स्वभाव अच्छा है, वही तो मैं भी कह रही हूँ भैया, बहुत अच्छे हैं उनके बात विचार, हर एक चीज बहुत अच्छे लगे मुझे। एक तरीकों से देखो तो वो सबसे अलग है थोड़ा सा, उनके विचार, उनके समझने सोचने की, उनके अंदर कोई चीज का वैसा घमंड या क्या शक, कुछ भी ऐसा नहीं है। वो दिल से मन से एकदम बिल्कुल साफ है। खाना पीना हुआ रविंद्र बड़े भैया जी? बोलो, आज तो हमारे लाइव में बहुत दिनों के बाद आए हूँ। मैं ठीक हूँ बहन, आप कैसी हैं? खाना पीना हो गया? पहुंचला पहुंचला। थोड़ा सा धीरे बात करो। मैं भी पलंग ठीक अंदर हूँ ना भैया, पहुंचला। थोड़ी सी सिर में दर्द हो रही है। हाँ। वो तो बीच में भी नहीं पड़ते जब लड़ते हैं दीदी से। का कलर वलर समझ में आए? हाँ भैया, मैंने सुना था, अच्छा लगा, वही हाँ। तो कह रही हूँ। बहन आज छुट्टी है इसलिए खाली टाइम में जुड़ गया। अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया जी कि बहन को याद तो कर लिए खाली टाइम में। थैंक यू, दिल 100 से रुपये। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। खाना पीना हुआ आपका? वह 100 रुपये डिस्काउंट होगा ना। पसंद आया कलर? तो ऐसा में का समझ ला था, का विचार बनल।
ना। ओके भैया, इधर भी फोन से बात हो रही है सबके, तभी म्यूट करना पड़ रहा है। लोग गाड़ी लेने गए हैं, कलर पसंद नहीं आ रहा। जी बहन, खाना पीना हो गया। ओके बड़े ऐसा भैया जी, थैंक यू। नहीं, सुना, अगर ऐसा हुआ कि मनुस्मृति मन हुआ दिवस तो की नहीं खाइए, हार्दिक ये तुम्हें देखना पड़ेगा। शुभकामनाएं। मोस्ट वेलकम है दीदी। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू सो मच। सेम टू यू दीदी। हाँ, कैसे हो आप? तब हम ये या जय भीम, टीडीएस नमो का हो, बुद्धाय अभी दीदी आपको जी। बढ़िया कैसी हो कलर मिल सिस्टर? मैं जाएगा, लेना बिल्कुल तो ले ठीक हूँ जाइए। दीदी। म्यूट करना पड़ रहा, हस्बैंड बात कर रहे हैं फोन पे। मैं तो मन ठीक हूँ, आप किया सही बताओ है, कैसी लहू हो? कई मैं भी कलर ठीक अब हूँ आ रहा दीदी। कल तबीयत कुछ डाउन थी, आज थोड़ा सा आराम है। सिर में बहुत दर्द हो रहा था। वीर जी सादर नमो बुद्धाय। जय भीम। वीर भैया गए अभी कहीं, फोन करने आ रहे हैं अभी। है। सब ठीक है, जब एक दिन ले लेबा ना सब ठीक हो जाएगा। बहन, काम में व्यस्त होने के कारण मैं खुद लाइव नहीं आ पाता। बड़ी मुश्किल से 2-4 शॉर्ट वीडियो डाल पाता हूँ। हाँ भैया, मैंने देखा आपका काम भी तो वैसे ही होता है ना, मेहनत वाला काम होता है। कहाँ से टाइम मिल पाएगा, मैं समझ सकती हूँ। बिल्कुल बात आपकी सही है भैया। थैंक यू सो मच भैया। कोई बात नहीं है, बस भाई बहनों की इतना ही प्यार आशीर्वाद बहुत काफ़ी है। चाय नाश्ता खाना हो गया आपका? अभी नहीं दीदी, खाना वाना बना के, तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। कल सिर में बहुत दर्द था, मैं सुबह लेट उठी हूँ। और बच्चों का स्कूल भी नहीं था। बच्चों का आज पार्टी थी, वो भी ऑनलाइन हुई है, तो मैं लेट उठी हूँ। फिर खाना वाना बनाई, झाड़ू पोछा करी, नहाई, फिर छत पे गई। छत पर से धूप से थोड़ा सा बाल वाल सुखा के नीचे आई, अभी खाना नहीं खाई। सुभाष बड़े भैया जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आपका। कैसे हो भैया? हेलो बोलो भैया। लाइक डन। ओके, थैंक यू भैया, थैंक यू। कैसे हो आप, ये बताओ पहले। वीर भैया कहाँ चले गए? अभी तो साधना दीदी के बारे में बात कर रहे थे। जब साधना दीदी आ गई, वीर भैया चले गए। लाइव में जुड़ने वाले सभी अम्बेडकरवादी यूट्यूब फैमिली को दिल से जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। हमारे रविंदर भैया की तरफ से सभी अम्बेडकरवादियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। स्वास्थ्य कैसा सुभाष भैया अभी आपका? दीदी आपका खाना पीना हुआ साधना दीदी? गुणवंत भाई श्रीमली, जय भीम भैया, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आपका हमारी लाइव में। कैसे हो आप? सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सभी छोटे बड़े सम्मानित भाई बहनों को हमारी साधना दीदी की तरफ से है। थैंक यू दीदी, थैंक यू। नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्ते जी। क्रांतिकारी नीला सलाम जी, सुभाष भैया जी की तरफ से। अभी खाना नहीं हुआ, नाश्ता हो गया है। अच्छा दीदी, और बताइए बच्चे और जीजा घर में सब लोग कैसे हैं? आप कैसे हो बहन जी? मैं ठीक हूँ भैया, आप बताओ आपका स्वास्थ्य कैसा है? आपका तबीयत तो सही नहीं था ना, कैसे हो अभी? हम ठीक हैं। ओके भैया, थैंक यू। ठीक ही रहना चाहिए। लाल जी बड़े भैया जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आपका हमारी लाइव में। कैसे हो बड़े भैया जी?
जीजू शायद आज जा रहे हैं और बच्चे स्कूल गए हुए हैं। शायद जा रहे हैं दीदी, जीजू शायद कहाँ जा रहे हैं? जीजू आज जा रहे हैं अमेठी। अच्छा, हमको लगा कि शायद जा रहे हैं, आपको अभी वो भी कंफर्म नहीं है। अच्छा, तभी तो वीर भैया जी अभी चर्चा कर रहे थे, बहन को अभी कुछ पता होता नहीं है। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच भैया, सुभाष भैया। लाइव में जुड़े सभी भाई बहनों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। जीजू जा रहे हैं पर दीदी को पता नहीं है, शायद जा रहे हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम भैया, लालजी भैया जय भीम, कैसे हो आप? शायद मतलब आज कंफर्म नहीं है, क्योंकि ट्रेन का कोई कंफर्म नहीं हो रहा। कल जाएंगे मुझे ऐसा लगता है, बट पता नहीं। अगर ट्रेन का कंफर्म हुआ तो आज ही जाएंगे। अच्छा, ऐसी बात है दीदी, क्योंकि आजमगढ़ की ट्रेन हमारे यहाँ से है नहीं, डिवियापुर से, इसलिए दिक्कत है। अच्छा दीदी, आप लोग भी आजमगढ़ से जाते हो? आजमगढ़ की ट्रेन नहीं है आपके यहाँ से, डिबियापुर से, इसलिए दिक्कत है। अच्छा, हम ठीक हैं, आप बताइए। हम भी ठीक है भैया, आप सभी का आशीर्वाद है, हमारे महापुरुषों की कृपा है, करुणा है, हम भी ठीक हैं। आप सभी को जय भीम, जय भीम, जय भीम भैया, जय भीम। तो टिकट पहले से कराना चाहिए नहीं दीदी, तत्काल में हो जाता है। मौसम भी बहुत खराब है, सारी ट्रेन बहुत लेट है इधर से। हाँ दीदी, मौसम की वजह से कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, मौसम खराब है। लेकिन आज तो धूप है हमारे इधर, हवा बहुत तेज है। कुहेरा बहुत हो रहा है ना गांव में। जय भीम भैया, जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम, जय भीम भैया, जय भीम, बड़े भैया जी जय भीम, नमो बुद्धाय। कन्हैया कुमार जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, बड़े भैया जी, स्वागत है आपका हमारे लाइव में। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया, आप बताओ आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ भैया, आप बताओ आप कैसे हो? जी मैं बढ़िया हूँ। ओके भैया, बढ़िया ही रहना चाहिए। खाना पीना हुआ आपका?
जी, ओके भैया। और बताइए फैमिली में सब लोग कैसे हैं? जय भीम, जय भीम, जय भीम बड़े भैया जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम भैया। बाय बाय भैया, बाय बाय। बाय बाय बड़े भैया जी।